Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Good evening, listeners. Welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Sonu Sood and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उद्यन रे जी। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Welcome, Udyan. धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है सोनू। Thank you, Nikhil. The top stories of today. Sensex plunges 650 points from day's high and ends 31 points up amid volatility. Nifty closes above 21,500. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the country's largest global trade show at Gandhinagar. And crude oil prices rise around 2% amid tensions in West Asia. सेंसेक्स आज 650 अंक के उछाल के 7 दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्थिरता के बीच 31 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 21,500 अंक से ऊपर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में देश की सबसे बड़ी वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% का उछाल। भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबारी सत्र के अंत में निवेशकों की मुनाफा वसूली के कारण प्रमुख घरेलू सूचकांक दिन के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आकर करीब सपाट स्तर पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.05% की बढ़त से 31 अंक की तेजी के साथ 71,386 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.15% की तेजी से 32 अंक चढ़कर 21,545 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.07% के लाभ में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.37% की तेजी के साथ बंद हुआ। As Nikhil just said, key domestic indices cooled off from the day's high to end on a flat note today amid increased profit booking by investors towards the end of the session. The Sensex ended 31 points or 0.05% up at 71,386. The Nifty also jumped 32 points or 0.15% to close at 21,545. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.07% and the small-cap index rose 0.37%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 companies appreciated, while those of 15 companies declined. Larsen & Toubro gained 1.6%, Bharti Airtel rose 1.5%, and Tata Motors added 1.3%. On the other hand, Nestle India declined 1%, Asian Paints and Bajaj Finserv both fell 0.9%, HDFC Bank plunged 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors gained while 5 declined. Realty sector surged 2.5%, power rose 1.1% and auto sector gained 1%. On the other hand, BankX fell 0.5%, financial services slipped 0.4% and the telecommunications sector ended 0.2% down. The overall market breadth was positive as shares of 2,241 companies appreciated while those of 1,606 declined. A total of 97 companies remained unchanged.
Udayan, what would you say today? It's been such a volatile day at the markets, and the markets had risen more than 650 points at one point, and then we saw this, plunging amid profit booking. How do you see the mood of the market, and what lies ahead? Well, it's quite true that it's been very volatile. 650 points up and almost ending up flat. But the market's got a good handover, as people say, from what happened in the US in the last trading session, and that obviously was infectious. But then reality must have, of course, profit booking happened, and reality would have set in. So what I think the market is trying to do is figure out how the earnings is going to pan out, especially for IT companies. TCS would be first of the blocks in about, I think, 2 days. And then, of course, first, US inflation data is all set to come out. Then our inflation data is going to be there. So that will actually determine how the monetary policy is going to pan out in terms of effectively interest rates. When, in the course of this year, could things really, an official end to the tightening cycle is announced, if at all. And that will obviously determine the moves of the markets. So I think some more information is being sought, which is on its way. So you feel that these triggers of the start of the domestic earnings season and the CPI, the Consumer Price Index numbers, both from US and from India, coming on Friday, from US they are coming on Thursday. You feel that if these triggers are positive, then the markets could again be on a stable up move? Unless there's a bad news, the markets should continue. Our markets, Indian markets, should continue on a in a positive direction. The only issue for us is if there is some kind of negative headline or negative interpretation, or the two armed conflicts that are happening, we get additional new areas of worry that come out. Apart from that, I think we should be on our way. उद्यन बैंकिंग शेयरों में और जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के शेयर्स हैं उनमें बिकवाली काफ़ी तेज़ी से देखी गई. क्या असर पड़ सकता है मार्केट पर इसका? ये देखिए, ये तो मूवमेंट होता रहता है, और आज शुरुआती दौर में तो मिड कैप स्टॉक्स वो बहुत बेहतरीन कर रहे थे. तो कई बार टैक्टिकल प्ले होता है, कई बार प्रॉफिट बुकिंग होती है, कई बार नई खबरें होती हैं, कई बार लार्ज जो प्लेयर्स होते हैं या कोई एक हेडलाइन, जैसे आज एक लीडिंग ऑटो प्लेयर ने बायबैक्स का अनाउंसमेंट किया, उससे फ़र्क पड़ जाता है. तो मजमूई तौर पे एग्रीगेट लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे कई बार ये चीज़ें स्प्रेड कर जाती हैं. तो इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने वाली बात नहीं है, और लार्जली जो हमने अभी 2-3 बातें कही हैं उससे शायद डिटर्मिन हो. लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेगर शेयर्स की काफ़ी चर्चा हुई थी, और हालांकि उम्मीद ये जताई गई थी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 2023-24 के बाद से जो वक्त शुरू होगा, इसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना लोगों को ज़्यादा होगी. लेकिन अभी से उसमें एक अलग सा असर देखा जा रहा है कि हाँ, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. मानते हैं ऐसा आप? नहीं, देखिए, मल्टी बैगर अगर आप कह रहे हैं तो वो लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज नहीं होंगी. आपके स्मॉल कैप या मिड कैप में भी कुछ मिड कैप होंगे. स्मॉल कैप जो है, जो मल्टी बैगर होते हैं, उनका खतरा है मल्टीपल लेवल पे गिर भी सकते हैं. बिल्कुल. तो जितना सब उसमें मोर्टेलिटी बढ़िया नहीं रहती है, तो वो एक अपने में रिस्क रहता है. जो निवेशक है उनके पास एक थाली में जैसे मिक्स रहता है, पौष्टिक आहार होता है, चटपटा आहार होता है, उसमें वैसा बैलेंस चाहिए होता है. Before we ask you the next question, we'll take a short commercial break and be back with Market Mantra. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है.
Welcome back to Market Mantra. Udayan, I'd just like to ask you one question. Although the market has been flat today, but it's near all-time highs, both Sensex, Nifty, and in fact, small cap index today hit fresh all-time high. So you think the dilemma for investors has deepened, that whether at these high valuations where our market cap has crossed the GDP, at these high valuations, should the investors continue with their investments, or the risk of missing the bull run is greater given the strong economic fundamentals? How do you see, how should investors resolve this situation? So no, the key, most important thing, if it is possible, and it is possible, that investors don't invest depending on the situation in the market. That is the job of the traders who will make an income out of it. If you're investing, you will be doing it for some goal that you have, something that you want, maybe a house or a vacation or retirement or children's higher education. They have, short-term market movements have nothing to do with them. So what you want to do is you want to harness whatever positive things that the market can offer, and they typically over a long term they offer a very good, much higher than fixed deposit return. So the idea is to keep investing regularly. So if it's 1,000 rupees, you keep investing 1,000, say every week or every month. And one good way is to do it through mutual funds. If you can't do it, maybe you do it in some other way. Maybe you directly invest in an index fund or something like that, and do it regularly and completely disregard. When we are talking about investments, we are not talking about money that you'll need tomorrow, day after, or 1 year later. We are talking about they are earmarked for things that you'll need 5-8 years down the line. So markets moving up and down shouldn't be concerning you, and that is the strategy you should have for your near-term requirements. You should keep some money aside, maybe 6 months of expenses, etc., maybe some more money, and rest should be for the future. And briefly, you feel the last 4 years bull run will continue this year also, this calendar year? Well, Sonu, if we are expecting 7.5%, then how will that happen without stock markets going up very significantly? So that is a given. Either we say that our economy is not going to grow so in such an exciting way that we are anticipating, then we can be pessimistic about our stock markets, because anybody who wants to grow will have come to the stock markets to raise money. अभी सोनू ने जो सवाल आपने पूछा, मुझे उसी से थोड़ा सा कुछ याद आ गया. इस फील्ड में, शेयर मार्केट में आजकल ऑटो सेक्टर से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं. आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं इससे? देखिए, वहाँ पे एक मिक्स्ड कहानी चल रही है. कुछ इलाकों में बेहतर चल रहा है, जैसे जो मिड साइज और हायर लेवल लग्जरी कार्स वगैरह हैं वो बेहतर हो रहे हैं. जो छोटी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे चैलेंजेस हैं, कुछ और इलाकों में चैलेंजेस हैं. तो ऑटो क्षेत्र और इकोनॉमी वो साथ साथ ही चलते हैं. अगर सबकी आय बढ़ रही है तो लोग लोन भी लेंगे, वो गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे, पुरानी गाड़ी को रिप्लेस भी करेंगे. अगर इकोनॉमी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो रहा, मतलब सबके इनकम्स बढ़ने की ज़रूरत है. इकोनॉमी में अगर एक क्षेत्र बेहतर कर जाता है, आम एवरेज आदमी की जो है व्यक्ति की आय नहीं बढ़ रही है, फिर वहाँ पे चैलेंज आ जाता है. क्यों? ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो कार लोन लेके गाड़ियाँ खरीदते हैं. तो ये याद रखना पड़ेगा, लोन आप तभी लेंगे, बड़ी खरीदारी तब करेंगे जब आप फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं. बिल्कुल. अब रुपए पे नज़र डालते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 11 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. वहीं 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक आज उछाल के साथ 102.42 पर था. और अब रुक करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख हमें देखने को मिला. जापान के निक्केई सूचकांक में 1.1% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक 0.3% ऊपर चढ़ गया और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% की तेजी दर्ज की गई. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की सुस्ती आई और हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% के नुकसान में रहा. यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो दिन के कारोबार में गिरावट का रुख था. जर्मनी का डेक्स 0.2% नीचे आकर कारोबार कर रहा था. फ्रांस का कैक 0.1% लुढ़क गया और लंदन का FTSE 100 करीब सपाट रहते हुए कारोबार कर रहा था. And moving to US, the three major US indices ended higher yesterday. The Nasdaq recorded 2.2% gain as a fall in treasury yields helped lift mega cap stocks. The S&P 500 jumped 1.3%.
The Dow Jones Industrial Average rose 0.6% as a sharp drop in Boeing shares kept gains on the Dow Industrials in check. How do you see the situation developing in the West? There were so many fears of recession and slowdown. Do you think things are stabilizing despite the geopolitical situations not being too good? Well, Sonu, the interesting thing is, despite people who are pessimists, they're finding the markets and the economy, especially the US economy, to be very resilient. It's resilient. But if you see year on year, quarter on quarter, overall, there is a some kind of a cooling down. One wouldn't call it a slowdown. Somebody might call it a slowdown. The scorching pace is not there anymore. So eventually, if this trend continues, United States economy will be in a tepid economic growth zone somewhere towards the end of this calendar year. That's what's being expected, and that's where experts expect somewhere around that time, or maybe a couple of months down the line, the rate cuts will start materializing. So there's no doubt that overall economic growth from that reopening dividend that it got, that has worn off, and now it's not as great as before. And of course, Sonu, one quick point: there's a lot of global economic growth was happening because of global trade. For decades altogether. Now every country is going with these restrictive sort of pacts, bilateral and trilateral kind of pacts. That has restricted then supply chain issues, where you're trying to make secure supply chains. So that free trade paradigm, that the amount of global income that it created, it has also shaped a little bit of that growth also. Right. Moving to the Indian macroeconomic situation, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's largest global trade show today at Gandhinagar, one day ahead of the vibrant Gujarat Global Summit 2024. President of Mozambique, Felipe Nyusi, President of Timor-Leste, José Ramos Horta, and Gujarat CM Bhupendra Patel were present on the occasion. Spread across an area of 2 lakh square meters, the vibrant Gujarat Global Trade Show will be India's largest ever global trade show. A total of 100 countries are participating in the 5-day trade show as visiting countries, while 33 countries are joining as partners. Over 1,000 exhibitors in the research sector, representing 20 countries, including Australia, South Korea, Singapore, UAE, UK, Germany, and Norway, will participate in the trade show. This time, the trade show will feature 13 halls, each dedicated to various themes, including Make in Gujarat and Atmanirbhar Bharat. Around 450 MSME units will also take part in the trade show. Cutting-edge products and services across various sectors, including the sunrise industries like electric vehicles, green hydrogen, renewable energy, semiconductors, and cyber security, will be presented in the trade show. How important do you think this global trade show is in context of the inclusive and equitable development of India? You know, we have seen this SBI research report debunking K-shaped recovery, where they have shown that the Indian, Indians have moved from lower class to middle class in a big way. 19.5% of small firms have transitioned into larger firms through MSME value chain integration. So you feel all this is possible only because of these efforts that we are seeing of these trade shows and trade meets? Well, I would say that Vibrant Gujarat was a very successful and popular event much before some of these initiatives came, and it is just, one thing has rubbed off on the other. So when you have lots of policies happening at the national level, they just rub off, and what happens is typically the states that have that environment, that ecosystem, you're doing well, you got ports, world-class ports, then you start automatically a disproportionate
it's very obvious a disproportionate amount of benefit will go to those firms and to those states which have all the right conditions. So you see, if you see Tamil Nadu, you see Gujarat, Even UP we saw recently. yeah. So these would be the other states, one of which you just named, will be the ones who will be playing the catch up kind of role. And also what it does, Sonu, is that it gives a template for other states to follow. They can figure out that, okay, this has been successful, these are the issues, people have already done this, so you want to replicate it, but in a way where your strengths are, whatever strengths you have, you and your priorities you have as far as the states are concerned, you try to integrate that in your policy. So that's how I would say things would pan out. Before we proceed further, we'll take another short break and be back with you. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र में। उद्यम वैश्विक ट्रेड शो की हम बात कर रहे हैं और कुछ दिन पहले हमने खबर ये भी सुनी जो आई कि सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। हालांकि दोनों स्थान काफ़ी दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक भी नहीं है, लेकिन ये ऐसी पहल है जो गुजरात को एक बड़े पैमाने पर वैश्विक पटल पर रख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि आज की डेट में बड़ी कंपनी से हम निवेश करने की उम्मीद करते हैं, तो एक माहौल वहाँ पर दिया जा रहा है कि आप आइए, देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। भारत के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ में उन कंपनीज के लिए भी होगा। लेकिन इम्पैक्ट अगर अन्य चीज़ों हम देखें, अन्य सेक्टर्स पर देखें, तो कैसा असर देख सकते हैं इसका? देखिए, जो आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करें वो तो वेल डिजर्व्ड है, और जिस शहर का आपने नाम लिया वो कोई उसका रोल तो हमें मालूम है हमारे निर्यात, आयात और निर्यात दोनों में। तो अगर आप बिजनेस कनेक्शंस, बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स में को हेल्प करना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम कुछ हमारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, उद्योग ऐसे हैं, वो ग्लोबल विश्व में लोहा मनवा चुके हैं, और वहाँ पे ये जो एडिशनल जो चेंजेस आ रही हैं वो आपको मदद ही करेंगे। और हम कई चीज़ें जो हैं जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पहल कर रहे हैं, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बार आपके एक शहर या एक एरिया में बेहतरी आती है तो आप दूसरे एरियाज़ को भी डेवलप करते हैं, और वहीं से एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाता है। So this is a very good example of competitive federalism reaping benefits. Absolutely, and they do compete, because you would see gone are the days, Sonu, when the chief ministers or other people were just political leaders. They have been going abroad, making pitches, and it has worked. It has worked because people, unless you go out and give people information, because it's an information overload. There are other countries, other provinces of other countries. You're actually competing with so many competitors, and therefore, in a certain way, chief ministers and other people have become like CEOs or COOs who are making a pitch to investors and other industrialists to come and participate in the industrial and economic growth. So it's a very professional and mission mode approach. Absolutely. Yeah. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संधारणीयता, निवेश, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे। अगले महीने की 26 तारीख से शुरू हो रही वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2024 के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। वस्त्र मंत्रालय की ओर से 4 दिन की प्रदर्शनी नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में लगाई जाएगी। वस्त्र मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत 2030 के अंत में 100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कस्तूरी कपास पहल, पीएम मित्र पार्क और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन से संबंधित सरकारी योजनाएं कपड़ा उद्योग के विकास को सुनिश्चित कर रही हैं। इस प्रदर्शनी के बारे में उन्होंने कहा कि 50 देशों के 3000 से अधिक व्यवसायी और खरीदार इसमें भाग लेंगे और कार्यक्रम में वस्त्र व्यापार, प्रौद्योगिकी
तथा परंपरा के संगम के साक्षी बनेंगे। सबसे खास बात इस खबर की है कि 100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की बात कही जा रही है 2030 तक। अभी भी हम काफ़ी बड़ी संख्या में निर्यात करते हैं और एक बड़ा उद्योग हमारे देश में है, काफ़ी प्रोत्साहन इससे मिलेगा और नए नए चीज़ों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बात तो बताने वाली बात है, जो कि हमें एडमिट करने वाली बात है कि वस्त्र उद्योग में हमारे पास प्रेजेंस था, हमारी मिलें थी, वो कई मिलें जो हैं ट्रांजिशन नहीं कर पाई। तो हमारे पास वो एक बेस तो था, तो अब वहाँ से लेसन्स लेके, और कई ऐसे देश हैं जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, जो कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे जो राज है, जो सक्सेस फैक्टर्स है, वो तो हमें मालूम है। हमें सिर्फ अच्छी तरीके से हमें उसको रेप्लिकेट करना है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रोज़गार के जो अवसर वो प्रदान करते हैं वस्त्र उद्योग, वो ज़बरदस्त है। और मेड इन इंडिया का अगर लेबल आपको प्रचारित करना है, वस्त्र उद्योग से बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है। Moving on to commodities, oil prices rose around 2% today after sliding in the previous session as markets weighed tensions in West Asia against demand worries and rising OPEC supply. In intraday trade, Brent crude was trading 1.9% higher at $77.58 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 2% higher at $72.20 per barrel when reports last came in. So yesterday we saw a fall, today there's a rise. But do you think that sharp price cuts by top exporter Saudi Arabia and a rise in OPEC output, is it likely to offset the worries about escalating geopolitical tensions? Absolutely, Sonu, because even US has been increasing its supply. Additional rigs have come into play, and more rigs are coming into play. So every time the producers, OPEC is going to try and lift up the prices, additional supply can come and counterbalance it. So before that was not visible, now at least that influence is coming into the picture. So you feel that the prices are likely to stay below $80 a barrel? That may be a tough one to crack, but post pandemic, that supply source was not visible, additional supply source. Now we are getting to see that. और गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना फरवरी के वायदा कारोबार में उछाल पर था। 235 रुपए की बढ़त से सोना 62,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 53 रुपए की बढ़त के साथ 72,480 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। वैश्विक बाजारों में आज सोना तेजी के साथ $2,041 और 70 सेंट प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी वृद्धि से $23.31 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। So what will you say? What is the you can say the attraction of gold now? It should be for investors, given the situation that we are in. On one hand, we have a lot of conflicts, we have a lot of challenges, and on the other hand, the economies are picking. Well, Sonu, gold should not be driving your portfolio or your growth of your money. It should be there to stabilize. What you need, Sonu, is a consistently high return. Gold is like a voltage stabilizer. It comes and makes sure that your returns are stable and consistent as far as possible. So gold is a stabilizer role. So therefore, if you have invested 100 rupees, say 5 to 10 rupees should be in gold, and ideally you should be in sovereign gold bonds. So you feel that sovereign gold bonds is a safe bet? Absolutely. Government is issuing it, no storage cost, no purity issues, and then you get a coupon rate of 2.5% per annum. No other gold investment gives you that. So these are very helpful features. So to give a perspective, just briefly, on November 15th, what was the sovereign gold bonds return, the first tranche? I wouldn't be able to say, but on and off, I've seen like 2 or 3 years back, 11% plus. उद्यन जी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Udayan. And before we close, a reminder of the headlines. Sensex plunges 650 points from day's high and ends 31 points up amid volatility. Nifty closes above 21,500. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the country's largest global trade show at Gandhinagar. And crude oil prices rise around 2% amid tensions in West Asia. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.